છે કે નહીં, જોયું કે નહીં? હાથી કેવી બાંધે, એવી એકદમ ટાઈટ. ઓલાને જીવ આવી ગયો ને કાઈ બોલવું હોય ને અચાનક પાછો ફરીને આવી ગયો હોય, ઘણાને થાય એવો. આમ ઊભા થઈ જાય કે આ ક્યાં ઊભો થયો, પછાડે. અગ્નિદાન દીધો છે, કેટલા જણે દીધો અગ્નિદાન? ઘણી વાર ઓલું બોડી હોય ને આમ ઊભું થાય, ખબર છે કે નહીં, જોયું છે કે નહીં? અને એવા પાણા જેવા પોલા લાકડા મૂકે કે ભૂલમાં પાછો ઊભો આ ગયો તે ગયો, પાછો ઊભો આવવો ન જોઈએ. એકરે દિવસ એવો આવશે ભાઈ. આટલી બધી લાગણીઓ કરી, ઇમોશનલ કચરા ઉભા કર્યા, કેટલી બધી તારા વગર મને ન ચાલે, મારા વગર તને ન ચાલે ને હા 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 હા. ને પછી ઓલો જીવ જાય તો કે આને નાખો, જલ્દી કાઢો, પતાવો ને. Is it worth it? Is it worth? અરે પૂછું છું ભાઈ, છુટકારો જોઈએ છે કે નહીં? પેલા એ તો કહો. હે, મુક્ત થવું છે. આ સમૂહ શરણ છે મુક્તિનું. મુક્તિ જોઈએ છે. આ પર્યુષણ છે મુક્તિનું. વર્તમાન જીવન એન્જોય કરવું અને આવનારા જે કોઈ પણ દિવસો બાકી છે કે આવનારા જીવનો જેટલા બાકી છે એ એન્જોય કરવાનો અભ્યાસ છે, ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ છે. Yeah, it is a training program to enjoy life in right perspective, in a scientific way, such that you will always enjoy with the flow of the time. Do you want this? Yes. So this is how this pollution is designed. भद्रभाव स्वामी, महावीर स्वामी के जाने के बाद 600 साल के बाद ये पर्यूषण नाम का पर्व का आयोजन भद्रभाव स्वामी ने कल्पसूत्र के माध्यम से किया, जो आज भी हमारी प्रथा के अंदर कल्पसूत्र वांचन हो रहा है. होता है कि नहीं? हाँ? कैसे होता है? किताब खोल के शुरू हो गए तो क्या चले गया पता नहीं चलता है. रिचुअल्स यानी कि परंपरा खोखली हो गई. उस कल्पसूत्र के अंदर क्या लिखा गया है पता है आपको? उसका मूल सार क्या है? 63 सलाका पुरुष यानी कि 63 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल यानी कि 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव, इनकी सबकी जीवन कहानियां हैं कि ये वासुदेव कैसे बने, पति वासुदेव कैसे बने, चक्रवर्ती कैसे बने, तीर्थंकर कैसे बने. आप क्या कर सकते हो कि आप वो बन सकते हो, वो सुनने के लिए ये कल्पसूत्र बनाया गया है. और हमको आज तक मालूम है कि इसमें क्या लिखा है. आप आपकी जिंदगी कैसे कन्वर्ट करोगे वो सब कल्पसूत्र में बताया गया है. क्या आपको पता है? कोई खोखला हो गया, परंपरा खोखली बना दी हमने, क्यों? 3-4 दिन में पोपट की जैसे गड़बड़ा दिया, बात खत्म, फिर साल भर कुछ नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. पर्यूषण इज ऑल अबाउट जो भी गलतियां हो गई, इट स्टार्ट्स विथ मिच्छामि दुक्कडम, इट कंटिन्यूज विथ मिच्छामि दुक्कडम, इट एंड्स विथ मिच्छामि दुक्कडम, एंड द होल लाइफ इज मिच्छामि दुक्कडम, एंड एवरी डे इट इज मिच्छामि दुक्कडम. और हमने मिच्छामि दुक्कडम किसके लिए रखा है? साल में एक बार. वो भी पहले व्हाट कार्ड भेजते थे, पोस्ट कार्ड, और अभी व्हाट्सएप. वो भी किसी का आया है, उसमें से थोड़ा कुछ लगा के भेज दिया. फॉरवर्ड मेहनती नहीं, फॉरवर्ड. So this is how it is. तो हमारे बीच में आप ये नाम पढ़ रहे किशोर भीमजी संघवी. उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक है और हर साल वो आते हैं मालिनी बेन के साथ.
ये हॉल का नाम भी वही है। तो वो हमारे बीच में पधारे हुए माननीय बेन किशोर भाई संघवी और संजोगवशात आई थिंक फर्स्ट टाइम their granddaughters are here. I hope that little bit what you have heard is useful for your life. I can only invite you to be here for 9 days. You will really enjoy the process of celebration. Paryushan is process of celebration. See, देखो क्या लिखा है वहाँ, पर्युषण, ज्ञान पर्व, शक्ति पर्व, भक्ति पर्व. So this Paryushan is about enjoying life, is energizing life, it is fulfilling life. और हमारी ये भावना है, ये देश में जा रहा है, अभी लाइव चल रहा है, कहाँ कौन से कोने में कौन क्या सुन रहा है. इसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी की वाणी 1800 करोड़ लोग कहाँ बैठे देख रहे. कल रिहन चैनल पे आ रहा था तो उसमें लाइव नेट के ऊपर, टीवी के ऊपर नहीं, नेट के ऊपर 2 लाख लोग देख रहे थे. और टीवी के ऊपर 5 करोड़ लोग देख रहे हैं. किसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है पता नहीं है, क्योंकि ये वाणी पंकज भाई की नहीं है, सिमंदर स्वामी की. और इफ यू लिसन प्रॉपरली एंड टेक इट इन, फर्स्ट इंपैक्ट इज यू विल हैव पीस जस्ट नाउ. और उसको आपने यहां से डाल के यहां डाला, यहाँ 2 रास्ता है, एक यहाँ से डाल के यहाँ जाना है, एक यहाँ से डाल के ऊपर गया है. ऊपर गया तो गर्म हो गया, नीचे गया तो ठंडा हो गया. मालूम है नियम, मालूम है जो ठंडा होता है कहाँ जाता है, तो गर्म होता है. हर પછી આ ગરમ થાય કે નહીં? હે? તો આ ઠંડા થવાનો મોસમ છે, ઠંડા થવાનો પર્વ છે, અને એની અંદર આવું આયોજનના સહાયક हमारा किशोर भाई की के आज की 13वां वर्ष है, ये 13वां साल है. और ये उनकी कृपा है कि जो ये आपका ये आयोजन का आपको लाभ मिल रहा है. जब से पर्युषण शुरू हुआ है, पूरे जैन समाज का पूरा रवैया चेंज हो गया, वाणी चेंज हो गई संत महात्माओं की, अप्रोच चेंज हो गया है. एंड वी आर लीडर्स, पायनियर्स. नाउ वी हैव कम विद दिस लाइफस्टाइल ऑफ पर्युषण, उद्यान लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. पर्युषण इज लाइफ ट्रेनिंग, कन्वर्टिंग योर नेगेटिविटीज इनटू नॉट पॉजिटिविटी, इनटू डिविनिटी. बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर डैमेजिंग. इफ यू हैव पॉजिटिव, यू आर बाउंड टू हैव नेगेटिव. बैटरी में બે હોય ને, પોઝિટિવ નેગેટિવ બે પ્રોબ્લેમ કરે. ભગવાનનો માર્ગ શું છે? ડિવિનિટી. ઇફ યુ ફોલો ડિવિનિટી, you will enjoy both. You will overcome negativity and enjoy positivity such that you never cry over it. That is called divinity. Divinity is law of nature. Positive is negative is not law of nature. So if you really want to enjoy life, it should be through divine path, according to law of nature. And that is what Simandar Swami has given. आज के युग में if you want to handle any भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल के अंदर जो सनातन मार्ग है, उस ये डिविनिटी का मार्ग है, ये दिव्यता का मार्ग है, जो सिमंदर स्वामी ने इस युग में भरत क्षेत्र के अंदर आया हुआ है. So enjoy this Paryushan and all credit goes to Kishore Bhimji, Sanghvi परिवार, मालिनी बेन, she listens, she is very engrossed, but कुछ खोई जाए. घड़ी વાર ઈચ્છા થાય તો આવી ન શકે એવું છે.
બરાબર કીધું. બસ એ બંધન તોડવાના છે. અને અમે તો એ ઈચ્છીએ કે તમે આ 9 દિવસ રહો, અમારી સાથે રહો. ફેન્ટાસ્ટિક રસ્તો છે. મુક્તિથી મુક્તિનો રસ્તો, બંધનથી નહીં. મુક્તિથી મુક્તિનો રસ્તો. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding all the way. So second zone of life is mental faculty, mental wellness. And Paryushan means balancing this mental faculty, mental balance, emotional balance, intellectual balance. If you use your intelligence more than required, દૂધમાં સાકર જોઈએ એના કરતા વધારે પડી ગઈ, સાકર એટલે ઇન્ટેલિજન્સ, અને બહુ સાકર નાખી દીધી, બહુ જબરજસ્ત ઇન્ટેલિજન્સ છે તમારી પાસે, બહુ સાકર નાખી દીધી. ઇઝ ઇટ એડવાઇઝેબલ? Are you getting it? So do you need to balance your intellect? ભલે તમે ગમે એટલા હોશિયાર હો, પણ ક્યાં કેટલું કયા ટાઈમે કેવી રીતે કોની સાથે શું ચાલશે એ પ્રકારે બનાવવું પડે કે નહીં? શું કરી શકીએ છીએ? Are we able to manage? Not at all. And due to these all technologies, it complicates the case. Yeah. And we get lost. પછી મમ્મી પપ્પા, Mom, man, you don't eat me up, man. મને મારું જીવવા દો, let me breathe. પછી દાદી આવે, બેટા મમ્મી કે છે ને બરાબર છે. દાદી તમે પણ મમ્મીની જ વાત કરો છો. નાની દાદી નાની બધા outdated. You are all outdated, obsolete. You are not able to understand me, man. એ બિચારા વડવાઓ કે એને બધી ખબર પડે છે કે આને જમેલો ક્યાં છે, પણ સાંભળે એને કહેવાય ને ભાઈ. So this Paryushan is what all the generation come together and balance it, man. Then only it can be balanced. Otherwise it's not possible at all. કારણ બધાની ફ્રીક્વન્સી અલગ છે. એક સોની ટીવીની ફ્રીક્વન્સી ને એક સ્ટાર ટીવીની ફ્રીક્વન્સી ને એક કલરની ફ્રીક્વન્સી, આ ત્રણે ભેગા થાય ક્યારે? નહીં ને. બટ ઇન ધીસ પર્યુષણ મહાપર્વ, this is frequency tuning program, so that all generation come together and decide to celebrate. Are you all ready to celebrate? What is common thing in all of us? તમે ગમે એટલા વર્ષના હોય, 1 વર્ષનું બાળક હોય, 5નું હોય, 10નું હોય, 15નું હોય, જવાન હોય, મધ્યમ ઉંમરનો હોય કે બુઢા થઈ ગયા હોય, સિનિયર સિટીઝન થઈ ગયા હોય, એક કોમન ફેક્ટર શું છે બધામાં? What is common? What everybody is searching? We are all searching something called Sukh, something called Sukh. But this Sukh never appears on screen. એ આવે આમ ઝમક દેખાડે, ઝલક દિખલા જા, 5 મિનિટ રહે ને પછી ગાયબ. બરાબર ને? 5 મિનિટ રહે ને પછી ગાયબ. So this Paryushan is all about coming to the point why we are on this earth and what we want on this earth. Once we get cleared about this, then only we can start actually living. मालूम है ये सब डिजिटल सिस्टम है. इफ यू एक्सेप्ट समथिंग यू हैव टू कंफर्म डिजिटली. ऑनलाइन ऑपरेट करते हो ना, तो उसके अंदर ये प्रोसेस है क्या, एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड कंडीशन. सिमंदर स्वामी बोले हैं कि अगर आप ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं तो यू हैव टू डू 3 व्हाट्सएप, सो आई विल नो दैट यू हैव एक्सेप्टेड. सो लेट्स डू दैट 3 व्हाट्सएप.
भगवान की फ्रेश एनर्जी मिल जाए। आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल। कुछ चेंजेस आया? ये इंस्टेंट है। जब भी दिमाग खिसकता है ना, ये व्हाट्सअप करना है। बिकॉज नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू चेंज माई लाइफ। सो इफ आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, जब भी दिमाग खिसक जाता है, किसी के ऊपर भड़क जाते हैं, या हम डिप्रेस हो जाते हैं, हाँ, कोई समाचार आने से या कुछ भी ऐसा नेगेटिव होता है, तो इमीडिएटली यू कैन चेंज द होल सिनारियो ऑफ योर लाइफ बाय दिस 3 व्हाट्सएप। 3 टाइम तो मैंडेटरी करना है, 3 टाइम मैंडेटरी, कंपल्सरी। कभी कभी सुबह उठने के साथ, आंख खुलने के साथ, सोने के पहले और 4 बजे। समझ में आ गया? ये 4 बजे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय मैंने कम से कम 5 करोड़ लोगों को सिखा दिया है। तो वो एनर्जी है ना, एक साथ ब्लास्ट होगी 4 बजे। हाँ, 4 बजे ने चलो करते। यस, आज का दिन अद्भुत है, आपकी कृपा से मिला है। आज का दिन अद्भुत है। आई विल मेक माई लाइफ, I will enjoy my life. I will smile throughout life. In spite of everything. I will enjoy with everybody. I love you all. I thank you all. God bless you all. Namo Jinanam. Samuhik energy, this is called Samuhik energy. When this is explosion of divine energy, this is neither positive neither negative. ये divine energy है. Don't go for positive or negative. If you go for positive, negative is bound to come. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding all the way. Oh, jingle bell, jingle all the way. Simandar is coming along, riding all the way. Jingle bell, jingle all the way. Simandar is coming along, riding all the way. Paryushan is coming along, riding all the way, smiling all the way, laughing all the way, smiling all the way, laughing all the way. Jingle bell, jingle all the way. Simandar is coming along, riding all the way. Jingle bell, jingle all the way. Simandar is coming along, riding all the way, smiling all the way, laughing all the way, smiling all the way, laughing all the way, loving all the way, loving all the way. Jingle bell, jingle all the way. Simandar is coming along, riding all the way. Oh, jingle bell, jingle all the way. Simandar is coming along, loving 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 all the way.
Simandar is coming around, clapping all the way. Simandar is coming around, clapping